Assalamu alaikum, Umar. I'm just waiting for some students to join in. Then we can start. Why isn't everybody joining in today? Any idea? छुट्टी बना रहे हैं सब लोग हैं. Okay, then I guess nobody is coming. We should start. पता नहीं मोहम्मद फजल आए थे. Why did he leave? अच्छा जी चलो.
अच्छा class, we were studying about oh wow, good. Yes, Umar Ahmed, we will definitely do something today. Since it is a class, you can enjoy it from home. Okay, you didn't have to come to school, but you have to do something now in the morning also. We have classes and we'll be following those schedules. Okay, so in our previous class, we had studied about the kidney, if you remember, right? And kidney ke liye, you guys know that we had spoken about the structure of the nephron. ठीक है, हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, कौन सी वाली हमने देखी थी, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को. हमने ये वाली डायग्राम देखी थी और मैंने आपको बताया था किडनी में इस एरिया में the nephron is actually present and this nephron is responsible for filtering blood, right? So today we'll be studying, which we've already done, the labeling of the nephron. We'll be revising those, and then how the process of urine formation occurs in the nephron, or we can also say how is urine formed by the nephron. ठीक है? अच्छा. This is a diagram from Lamping. It's a little blur because the diagram in my book was blur. I've taken a picture of it. Okay, you can see that a nephron with its blood supply. You can see that the upper part of the nephron is lying in the cortex, that is the darker area of the kidney, and the lower part of the nephron is lying in the medulla. Okay, this is something that we had already discussed that day, that the upper part of the nephron was lying in the cortex and the lower part of the nephron was lying in the medulla. Okay? Then when we started off with the labeling, I told you this cup-like structure is known as the Bowman's capsule. Then we have the first convoluted tube, the loop of Henle, which is a U-shaped tube, the second convoluted tube, okay, and then the collecting duct. The second convoluted tube is also known as the distal convoluted tube, and the first convoluted tube is also known as the proximal convoluted tube. ठीक है, ये labeling आपको आनी चाहिए. You should be aware of the labels, because until and unless you are not aware of the labels, you will never be able to understand in which section what is happening. अच्छा. इसके अलावा I told you that the blood comes to the kidney by the renal artery and it leaves the kidney by the renal vein. The blood that enters the kidney, okay, the blood that enters the kidney consists of what? Oxygen, comma, urea, comma, glucose and mineral salts. ठीक है, these are all different things. इसके अलावा यूरिया के अलावा अदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं. ठीक है, हम कॉमा डालते हैं. ये क्या होते हैं ये हम इन अ वाइल बताएंगे. ठीक है, ब्लड दैट एंटर्स द किडनीज, ठीक है, थ्रू द रीनल आर्टरी consists of oxygen, urea, glucose, other nitrogenous waste and mineral salts. Okay, so this is what is entering here through the blood supply. Achha. When you can see this blood supply comes in, there is an afferent arteriole towards the Bowman capsule, and when it's leaving, there is an efferent arteriole. Afferent और efferent का फर्क ल्यूमेन का होता है. मैं अभी और समझाती हूँ वो भी आपको. उसके अलावा क्या होता है,
कि यू कैन सी बोमेंस कैप्सूल में एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जा रहा है, ठीक है. देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन द बोमेंस कैप्सूल व्हिच इज नोन एज द ग्लोमेरुलस. If we look at this structure here, you can see more clearly the difference between an afferent arteriole and an efferent arteriole. What difference do you see between the two? जल्दी से बताओ मुझे. माइक अनम्यूट करके बता दो, चैट पे बता दो. I want to see what difference do you see between the afferent arteriole and the efferent arteriole's lumen. What is the difference? No difference? कुछ नजर ही नहीं आ रहा किसी को. You can see the afferent arteriole has a thicker lumen, ठीक है, a broader lumen, and an efferent arteriole has a narrow lumen, ठीक है. afferent arteriole का lumen जो है वो broad है, जबकि efferent arteriole का lumen जो है वो narrow है, और बीच में एक network of blood है जिसे glomerulus कहा जाता है. होता क्या है बेटा कि afferent arteriole का क्योंकि lumen जो है वो broad है, बड़ा है, तो जो ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में वो यहाँ बहुत प्रेशर से आता है, बहुत तेज़ी से आता है, क्योंकि ये ब्रॉड है ल्यूमन. लेकिन जब जा रहा होता है तो बहुत स्लोली जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे ल्यूमन पतला हो गया है, नैरो हो गया है. इससे फ़ायदा ये होता है कि ब्लड कैन स्टे हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देयरफॉर मोर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस कैन टेक प्लेस, ठीक है. अफेरेंट आर्ट्रियोल ठीक है. तो आप देख सकते हैं द afferent arteriole has a broader lumen as compared to the efferent arteriole. Due to this, the blood enters the glomerulus at a high pressure but leaves at a low pressure, giving more time for diffusion of substances out of the blood towards out of the blood vessel towards the Bowman's capsule. ठीक है. If we look at this picture again, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये वाली नहीं, ये वाली, कि जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रॉड है और यहाँ पे नैरो है. यहाँ नहीं, ग्लोमेरुलस में ज़्यादा देर तक जब ब्लड रहेगा तो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ सब फ्रॉम द ब्लड टुवर्ड्स द बोमेंस कैप्सूल हो सकेगा, ठीक है. अच्छा, दो प्रोसेसेस होते हैं
जो आपके यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं. देर आर टू प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. वन इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड द सेकेंड इज selective reabsorption. ठीक है, देर आर टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व, are two processes involved in the formation of urine, comma, number one is ultrafiltration, पहले यही आएगा. ठीक है, and number two is selective reabsorption. ठीक है, ये इसी पैटर्न में आएंगे. द फर्स्ट प्रोसेस इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड द सेकेंड इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. अब इन दोनों प्रोसेसेस में होता क्या है, ठीक है, ये हमें पढ़ना है. अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द Bowman's capsule and the first convoluted tube. कहाँ पे हो रहे हैं ये दो प्रोसेस? पहला वाला Bowman's capsule and first convoluted tube में. ठीक है, in this process the unnecessary substances are diffused out of the blood into the nephron. ठीक है, यानी ब्लड से डिफ्यूज आउट करवा के क्या किया जाता है, उनको नेफ्रॉन में ले आया जाता है. द लिक्विड collected in the nephron is known as the filtrate. ठीक है, तो जो लिक्विड कलेक्ट हुआ है नेफ्रॉन में, इट इज नोन एज द फिल्ट्रेट. एट द मोमेंट इट इज नॉट नोन एज यूरिन. अभी उसको यूरिन नहीं कहेंगे. सही. होता क्या है कि कहाँ गया मेरा कर्सर, ये रहा. सब्सटेंसेस जो हैं, अगर आप मेरा कर्सर फॉलो कर रहे हैं तो इस ब्लड वेसल से डिफ्यूज होके इस तरह से दे विल कीप मूविंग आउट ऑफ द ब्लड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन. ठीक है, दे विल कीप मूविंग आउट into the structure of the nephron. ये देख रहे हैं आप, वाइडर और नैरो ये करके, यहाँ जो भी चीज़ होगी, extra substances, unwanted substances, they will diffuse out into the Bowman's capsule. ठीक है, and a similar action will also take place here. ठीक है, a similar action is also going to take place here in the first convoluted tube. यानी ultrafiltration में all the unwanted substances of the blood will be filtered towards the structure of the nephron. All the unwanted substances of the blood will be filtered towards the nephron. समझ में आ रही है बात यहाँ तक? अच्छा, क्या क्या फिल्टर हो सकता है आप देख सकते हैं यहाँ पे. ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें. अच्छा नहीं, ये रीअब्जॉर्ब होने वाली चीज़ है, सॉरी. ये देखें, इनटू द नेफ्रॉन जा रहे हैं, ये नज़र आ रहा है. यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिटिनिन है, अनवांटेड ड्रग्स हैं. ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज भी जा रहा होता है, और जो कुछ ज़्यादा होता है, मिनरल सॉल्ट्स जा रहे होते हैं. ये सारे के सारे आप देख सकते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में. यूरिक एसिड, क्रिटिनिन जो है, ये अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. जो मैंने आपको लिखवाया था ना, अदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, वो यही चीज़ें हैं. ठीक, तो ये चीज़ें जो है क्या कहते हैं, ये कहाँ जा रही हैं,
they are moving from where? They are moving from the blood vessel towards the nephron structure. अच्छा, ultrafiltration का जो process है, it will continue from the Bowman's capsule into the first convoluted tube. As soon as the filtrate is going to reach this part, that is the loop of Henle. Loop of Henle के आप देख सकते हैं यहाँ दो parts उन्होंने लिखवाए हुए, एक descending यानी नीचे जाता हुआ loop of Henle और एक ascending यानी ऊपर जाता हुआ loop of Henle. It is a U-shaped tube. तो यहाँ पे loop of Henle में और second convoluted tube में क्या चीज़ होगी? आपका ultrafiltration का process होगा, ठीक है? तो sorry, selective reabsorption. This process occurs in the loop of Henle and the second convoluted tube. Okay? All substances that may be needed by the body are reabsorbed from the structure of nephron. कौन सा structure है specifically? Henle towards the blood. यानी अब उल्टा चलेगा, ठीक है? Are reabsorbed back word use कर लेते हैं, ठीक है? दिस प्रोसेस सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन नहीं है, यानी सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही, कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, ठीक है? तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि पहले तो ये बताइए कि कहाँ होता है. इट इज़ अकरिंग इन द लूप ऑफ हेनले एंड द सेकेंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब. Secondly, you need to tell them that all the substances that may be needed by the body are reabsorbed back from the structure of the nephron towards the loop of Henle, that is loop of Henle towards the blood. Okay? The remaining filtrate is sent to the collecting duct, which is now known as urine. ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, ज़रा देखिए किस तरह से. ये मेरा बोमन्स कैप्सूल है, मेरा लूप ऑफ हेनले है, ये मेरा सेकेंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है और ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है? अच्छा, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है? ये अफेरेंट आर्ट्रियोल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये बाहर निकलनी है, एंड यू कैन सी दैट द ब्लड वेसल्स आर सराउंडिंग द होल स्ट्रक्चर, ठीक है? पहले मैं इसको बना लूँ. ठीक है, कुछ इस तरह से, जो कि अगर आप देखें तो यहाँ से ये ब्लू कलर की हो जाएगी, क्योंकि ये वेन में तब्दील होके और फिर ये वापस
जा रही है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, इनिशियली क्या होता है? इनिशियली मैं ग्रीन से दिखा रही हूँ कि सब्सटेंसेस जो हैं वो आपके ब्लड वेसल से बोमन्स कैप्सूल में फिल्टर हो रहे हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, यानी ब्लड से चीज़ें जो हैं वो बोमन्स कैप्सूल में आ रही हैं। ठीक है, ये क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये देखो, ब्लड से बोमन कैप्सूल की तरफ चीज़ें जा रही हैं। फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में भी यही हो रहा है और बोमन्स कैप्सूल में भी हो रहा है, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ ultrafiltration. ठीक है, which is this process? This is the process of ultrafiltration, यानी substances are moving from क्या कहते हैं the blood towards the Bowman's capsule. अच्छा, क्या क्या substances move कर सकते हैं ये भी list down कर देते हैं। हम green में list down कर रहे हैं ताकि तुमको पता चले। सबसे पहले of course यूरिया, उसको तो रिमूव ही करवाना है। ठीक है, उसके अलावा ग्लूकोज भी रिमूव हो सकता है क्योंकि वो स्मॉलर मॉलिक्यूल है। फिर उसके अलावा हमारे पास जो है मिनरल सॉल्ट्स रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स वाटर रिमूव होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे रिमूव हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है जब यही ब्लड वेसल्स और फिल्ट्रेट पहुंचता है आपका लूप ऑफ हेनले में। ये कहाँ पे पहुंचता है? लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि चीज़ें जो हैं वो आपके ब्लड से नेफ्रॉन से वापस ब्लड के अंदर आना शुरू होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आएंगी? वो चीज़ें जिनको बॉडी को ज़रूरत पड़ सकती है, ये आप देख सकते हैं। फ्रॉम द नेफ्रॉन थिंग्स आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल। अब एरो का आप डायरेक्शन देखो, इट इज़ टूवर्ड्स द ब्लड वेसल। पहले ग्रीन वाले जो एरोज हैं दे आर अवे फ्रॉम द ब्लड वेसल, और जो पर्पल वाले एरोज हैं दे आर टूवर्ड्स द ब्लड वेसल, यानी फ्रॉम द नेफ्रॉन सब्सटेंसेस आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल। ठीक है, क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकती हैं? ठीक है, ये लिखते हैं डेफिनेटली ऑल ऑफ द ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज की अल्टीमेटली बॉडी को ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है, सम मिनरल सॉल्ट्स डेफिनेटली जिनकी बॉडी को ज़रूरत है, एंड वाटर डिपेंडिंग on the water content of the body। यानी अगर हमने अच्छा पानी पिया हुआ है तो डेफिनेटली कम वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, और अगर हमने ज़्यादा पानी पिया हुआ है तो जो है ज़्यादा पानी पिया हुआ है तो कम वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, और अगर कम पानी पिया हुआ है तो ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, आपने देखा है जब हम जो है क्या कहते हैं वॉशरूम जाते हैं, तो अगर वी हैव कंज्यूम्ड गुड वाटर देन वी हैव अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ यूरिन, but if we have consumed lesser water then we have a lesser volume of lesser volume of urine because more water is reabsorbed into the body। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये होता है। ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यू कैन सी कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आपका यूरिया रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आपके दूसरा कोई नाइट्रोजनस वेस्ट अगर रिमूव हुआ है, क्योंकि वो सिलेबस में रिमूवल के तौर पे हमारे पास नहीं है तो हम उसको इतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन definitely all of the glucose, some of the mineral salts, again depending on the body's requirement, and water depending upon the water content, sorry content की spelling मैंने गलत कर दी है, ठीक है, of the body। ठीक है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो दैट इज़ द पर्पल पार्ट, दैट इज़ द सेलेक्टिव reabsorption, whereas ultrafiltration is the green part। Is it clear till here? Any questions? Wow, पढ़ते ही पढ़ते I have 13 students in my class and that is so good. I'm very happy everybody is in class।
ठीक है, any questions here? I guess it is clear to everybody how urine is being formed. और फिर इस जगह पे जब पहुंचता है ये सामान सारा जो फिल्ट्रेट होता है तो it is called urine here. ठीक है, ये आपका collecting duct है. You can see this is the collecting duct. This part is the collecting duct, and the collecting duct में जब वो फिल्ट्रेट पहुंचता है तो उसे यूरिन कहते हैं. एनी क्वेश्चंस बेटा? Something else. We don't have that picture with us. अच्छा, ये देख रहे हो यहाँ पे? ठीक है, अगर आप ये पिक्चर थोड़ी सी मैं मैक्सिमाइज करूँ, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल जो है नेफ्रॉन्स होंगे. ठीक है, जो इस पिक्चर में नहीं है. ऑफ कोर्स नेफ्रॉन्स के जितने भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो इस फनल लाइक स्ट्रक्चर में खुलेंगे जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं. ठीक है, तो जितना यूरिन नेफ्रॉन्स बना रहे होंगे वो सारा का सारा इस रीनल पेल्विस में जमा होगा और वहाँ से नीचे यूरेटर की तरफ जाएगा. ठीक है, ये भी मैंने बता दिया. और कोई क्वेश्चन है बता दीजिए. No questions? Sure, then I have The job of the kidneys is to filter the blood. Basically, we get dirty blood entering and clean blood leaving, and all of the waste products that are taken from that dirty blood exit as urine. Words like dirty blood and clean blood aren't particularly scientific, but it is a really convenient way to think about it. If we look at the cross-section of the kidney, the outermost part is known as the cortex. The next part is the medulla. Next is the pelvis. And the artery that supplies it is known as the renal artery. Renal is just an adjective which describes things to do with the kidney. It makes sense then that the blood vessel that leaves the kidney is known as the renal vein. And the tube which exits the kidney with all of the waste products is known as the ureter. And the ureter connects to the bladder, and then from the bladder, materials can exit the body. Inside of the kidneys, we've got lots and lots and lots of these tiny, tiny little structures, which are known as nephrons. Inside of each kidney, there might be about 1 million of these things. They're really, really small. Let's look closer at the first step of the nephron here. And now notice that blood which is entering, which is coming from a branch of the renal artery, is coming through a blood vessel which is relatively wide compared to the blood vessel which is leaving this area, and that blood will eventually connect up to the renal vein. In between all of this is a capillary network known as the glomerulus. And what happens is, because the blood vessel that enters is wider, it kind of gets a little bit constricted as it's trying to leave after the glomerulus. So the result is we get really high pressure inside of the glomerulus. The area surrounding this is known as the Bowman's capsule or the renal capsule, and the high pressure forces material to move from the glomerulus into the Bowman's capsule. Once the material's in the Bowman's capsule, it can then continue on through the tubule. But let's have a little bit of a closer look at how materials move across from the glomerulus and into the Bowman's capsule. Notice that there's lots of tiny little spaces between them. These spaces are really small, meaning that red blood cells can't get through. They're too large. Similarly, other large structures like proteins
are mostly too big to get through. Smaller structures, however, little molecules like urea, they are small enough to get through. So urea will transfer into the Bowman's capsule. Now you might be tempted to think that this is the job done. We've got rid of the toxic material that's gone into the Bowman's capsule. The rest of the blood can continue on as normal and re-enter circulation, and the job's done. Unfortunately, this isn't the end of the story. Because small things can fit through, other small materials, which are quite useful, will also fit through and enter the nephron into the Bowman's capsule. Things like salts, glucose, water, these things are all going to enter. Now, this part is known as ultrafiltration, the movement of materials from the glomerulus into the Bowman's capsule. So in order to get the useful materials back, we know there's got to be a next step. So we've got these materials now moving through the tubule. Let's investigate what's going to happen in a section of this. Here we've got the blood capillary represented in red and the nephron represented in green, and we can see in the nephron are lots of materials. Some of them are useful, some of them are not so useful. These materials can move from the nephron into the blood capillary via active transport. Notice that some of the materials have moved, some of them have not. In the blood capillary, we will have glucose, salts and water being reabsorbed from the nephron. The materials that are left behind, obviously we've got urea, because one of the main purposes here is to get rid of urea. But what we will also have is excess salts and excess water. Your body needs salts and it needs water, but it needs to have these things present in the correct amount. So only the excess materials are left in the nephron to eventually leave the body. Notice here that there is absolutely no glucose left in the nephron. Your body works really hard to get glucose into its system, and it's not going to lose any of it through the urine. It's not going to get rid of any of this stuff. Glucose may be present in urine, but it only happens if there is some sort of underlying medical condition that causes this. Now, this whole process of taking back the materials that are needed is known as selective reabsorption. Don't make the common mistake of calling it absorption. Reabsorption. It's very important that you get it right. Now that you know all the processes that go on, let's have a quick look at all of the labels that need to go onto the nephron. You already know the glomerulus and the Bowman's capsule, often known as the renal capsule. And next, the two tube areas are known as the proximal convoluted tubule and the distal convoluted tubule. And they are just the parts that come before and after this loop that's in the middle. And this loop is known as the loop of Henle. The loop has two parts to it. There is the descending limb and the ascending limb. The descending limb being the part where the material falls down, and the ascending limb where it rises up. Next is the collecting duct, and this is where all of the material from the tubule is going to enter. From there it will go down until it eventually exits the kidney through the ureter, and it can then exit the body. I'm sure by now you've come to realise that the kidney function is actually quite complicated. So let's try and represent it in a slightly different format and see if we can clarify all of the different steps. So dirty blood comes in, and then via the glomerulus the materials get separated. We get filtrate, which contains the waste material but unfortunately also contains lots of useful material, and that goes into the tubule. This gets separated from the blood, but it's incomplete blood right now because there's still lots of useful material like glucose and amino acids and things like that which are absent from the blood vessel. Through a process of selective reabsorption, material that is useful will be transferred back into the blood. And we've now got clean blood, which is complete. It's got all of the useful things. And this leaves behind in the tubule only the waste material. And that's the urea, as well as salts that are in excess of requirements, water that's in excess of requirements, etc. This material is then going to leave the body. It's going to go to the bladder. The material is now known as urine, and from there it can exit the body and go into the toilet. Obviously now the blood, which is useful, will go out of the kidneys via the renal vein, and it will go back into the circulation where it can be used like normal. Obviously, because this is quite a difficult topic, this is a place where people can quite easily lose marks in exams, so let's look at a possible question. The diagram shows a single nephron in the kidney. Describe the functions of the areas labelled X and Y on the diagram, and you should recognise that X is the glomerulus and Y is the tubule. So it's a 4-mark question. Let's see what you might say. At part X, the glomerulus,
ultrafiltration takes place. Always name the processes. That's one of those kind of obvious points that people sometimes miss. Small molecules move from the blood into the renal capsule, so it's the direction of the movement and what is moving. They are forced into the capsule under high pressure. That concept of high pressure is quite important to how this process carries on. At part Y, selective reabsorption of useful molecules. Notice selective reabsorption. You'll lose the marks if you just say absorption. Give an example of the molecule that could be transferred. One of them would be glucose, but there's lots you could mention. And these materials are reabsorbed into the blood capillaries. So that's saying that the useful stuff is then taken back to where it needs to be. Okay, class. I guess that was clear. Okay, any questions before we end today's session? मिस बोलो. मिस अगर सवाल है कि किडनीज में ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रीनल वेन में, रीनल आर्टरी में, या ग्लोमेरुलस जो भी है ये, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? बेटा सबसे ज्यादा क्या मतलब? ब्लड तो कंटिन्यूसली फ्लो करेगा ना, जमा थोड़ी होगा वहां पे. सबसे ज्यादा सबसे कम तो वहां पे होगा जहां पे ब्लड विल बी डिपॉजिटिंग, बट दिस ब्लड इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग. कोई जमा थोड़ी हो रहा है. दैट इज व्हाई यू कैन सी दैट द वेसल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. दे आर एंटरिंग एंड देन दे आर मूविंग आउट. इट इज जस्ट इन द ग्लोमेरुलस दैट वहां पे अफेरेंट और इफेरेंट आर्ट्रियोल का डिफरेंस इसलिए किया ताकि थोड़ी देर तक यहाँ ब्लड रुके, ताकि अंडर हाई प्रेशर यू कैन सी दैट मोर टाइम इज गिवन फॉर डिफ्यूजन. ओके. Any other question? No? नो मिस. I hope it's clear. चलो then that is all for today. अच्छा सॉरी, एक मिनट मैं अटेंडेंस लगा लूँ. खैर अटेंडेंस मैं उन लोग का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, मैं बाद में अटेंडेंस लगाती हूँ. वेट, गिव मी अ फ्यू मिनट्स. अरीबा क्या कह रही है? हाईएस्ट प्रेशर टू हार्ट एक्सर्ट करता है ना रेड साइड ऑफ द हार्ट. क्या मतलब? हाईएस्ट प्रेशर टू द हार्ट. हार्ट कहाँ से आ गया अरीबा? अरीबा रेड और ब्लू जो है वो ब्लड वेसल्स हैं. रेड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ब्लू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. Zunair, nephron is not a cell of the kidney. It is a structure present in the kidney that is responsible for urine formation. हाँ, सबसे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर जो है वो एओर्टा में होता है क्योंकि एओर्टा डायरेक्टली हार्ट से निकलती है. दैट इज करेक्ट. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस? चलें, then that is all for today. Take care all of you.